गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है टारगेट्स ऑफ इसरो। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी इंडियन स्पेस इनिशिएटिव्स के सक्सेस के बाद, जैसे कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने दो न्यू टारगेट्स जो हैं वो इसरो के लिए अनाउंस किए हैं। पहला तो टारगेट होगा इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना 2035 तक। दूसरा टारगेट होगा कि पहले इंडियन को मून तक लेके जाना तो 2040 तक। तो अभी रिसेंटली गगनयान मिशन की जो है असेसमेंट के लिए कि उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग चेयर करते हुए पीएम मोदी ने बोला कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं 2035 तक, और मून पर पहले इंडियन को भेजना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आने वाले टाइम में और भी चंद्रयान मिशन जाएंगे, जैसे कि जो नेक्स्ट चंद्रयान मिशन है वो मून से सैंपल्स लेकर वापस आएगा। इसरो चीफ जो है उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि हम शुक्रयान भी भेजना चाहते हैं, जो आने वाले टाइम में भेजा जाएगा। और भी इसरो के टारगेट्स हैं, जैसे कि वो अपना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाना चाहते हैं, लॉन्च पैड, ह्यूमन सेंट्रिक लेबोरेटरीज और टेक्नोलॉजीज जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल जो है उन्होंने रिसेंटली एंटरटेनमेंट चैनल्स को बोला है कि बहुत ही कॉशन रखो आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को टेलीविज़न प्रोग्राम्स में पोर्ट्रे करते हुए। तो ये BCCC क्या है? एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल फाउंडेशन ने जून 2011 में बनाई थी। प्राइमरी रोल इसका है सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशू करना नॉन न्यूज़ चैनल्स के लिए। और ये बहुत ही डेलिब्रेशंस के बाद इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के जो है तब ये गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, ताकि नेशनल इंटरेस्ट, रेशियल रिलीजियस हार्मनी, चिल्ड्रन, सोशल वैल्यूज़, इन सब कंसर्न्स को ध्यान में रखने के बाद ही ये गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं। अब कोई भी व्यूअर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है टेलीविज़न प्रोग्राम्स या शोज़ के अगेंस्ट, और ये BCC फिर उसका कंप्लेंट को एड्रेस करता है, जो कि 13 मेंबर्स की कमेटी होती है BCC में। एक चेयरपर्सन, 4 नॉन ब्रॉडकास्ट मेंबर्स, 4 मेंबर जो नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी कमीशंस के हैं, 4 मेंबर्स ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के। अब ये BCC काम कैसे करता है? अगर कंप्लेंट आती है तो उस पर जो भी पूरा प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हैं, और एंड में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट भी भेजते हैं कि क्या एक्शन लिया गया है। अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल फाउंडेशन 1999 में बनाई गई एपेक्स बॉडी है ब्रॉडकास्टर्स की। इस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। पहले इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन होता था। अब ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है ये, या आई एम सॉरी स्पोक्समैन है। और इसमें न्यूज़ और नॉन न्यूज़ दोनों ही चैनल्स जो हैं इसके मेंबर्स होते हैं। रिसर्च बेस्ड लेजिस्लेटिव इनपुट्स भी देते हैं गवर्नमेंट को, कि एक तरह से एक एडवोकेसी ग्रुप भी काम की तरह भी काम करते हैं ये, कि इनके फेवर में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सप्तकोशी हाई डैम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन नेपाल और इंडिया जो है उन्होंने रिसेंटली एग्री किया है कि सप्तकोशी हाई डैम की हाइट को रिड्यूस किया जाएगा। ये सप्तकोशी हाई डैम एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि सप्तकोशी रिवर ऑफ नेपाल पर बनाया जा रहा है। फ्लड्स को कंट्रोल करेगा ये साउथ ईस्ट नेपाल में और नॉर्दर्न बिहार में, और हाइड्रो पावर भी जनरेट करेगा। एक बायलैटरल प्रोजेक्ट है इंडियन और नेपालीज गवर्नमेंट का अंडर कोशी एग्रीमेंट। इसका जो है लोकेशन आपकी बराह क्षेत्र टेम्पल, संसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में लोकेटेड होगा। और कोशी रिवर क्या है? एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो कि नेपाल और इंडिया के थ्रू फ्लो होती है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इसका नेपाल में पड़ता है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और ईस्टर्न नेपाल से होती हुई ये गंगा में मिलती है आके इंडिया में। ओवरऑल लेंथ इसकी लगभग 729 किलोमीटर है, और पिछले 250 साल से ये अपना कोर्स चेंज करती रहती है, अनस्टेबल रहती है ये हैवी सिल्ट की वजह से। इसके बार बार कोर्स चेंज करने की वजह से जो है इसको ये डिवास्टेटिंग फ्लड्स लेके आती है बिहार में, इसलिए इसको सॉरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रोड सेफ्टी
के लिए को इम्प्रूव करने के लिए और इंसिडेंट रिस्पांस टाइम को रिड्यूस करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस लेकर आया है। और इससे होगा क्या, डिजिटल रीइंफोर्समेंट होगी नेशनल हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज पर। और ये एक तरह से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएगा पूरे हाईवेज़ पर, नेशनल हाईवेज़ पर। और फिर वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम इंस्टॉल करेगा। ये जो कैमरास होंगे ये हर 10 किलोमीटर पर जो है नेशनल हाईवेज़ पर लगाए जाएंगे, कवरेज इसकी। और ये एक तरह से ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास होंगे। ये पेट्रोल व्हीकल्स को और एम्बुलेंसेस को ईच और जो है टाइम टू टाइम अलर्ट देंगे कैमरास इंसिडेंट को डिटेक्ट करते ही। ई चलान्स भी जनरेट करेंगे और नियर बाय जो है नोटिफिकेशंस भी भेजेंगे राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के ऊपर नियर बाय ट्रैवलर्स को। एक्टिव रोल भी निभाएंगे ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं RISC-V टेक्नोलॉजी, रिस्क वी टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चिप डिज़ाइन मेकर क्वालकॉम ने रिसेंटली गूगल के साथ पार्टनरशिप की है कि वो रिस्क वी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चिप्स बनाएंगे वेरेबल डिवाइसेस के लिए लाइक स्मार्ट वॉचेस। ये रिस्क वी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स बनाने की। इनिशियली ये शुरू हुआ एज अ प्रोजेक्ट ऑफ UC बर्कली और सिर्फ एकेडमिक यूज़ के लिए ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। लेकिन ये ओपन सोर्स रखा गया तो इसलिए मेंबर कंपनीज इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं प्रोसेसर की इनोवेशन के लिए। ये डिज़ाइनर्स को अलाउ करेगा कस्टमाइज़ करने के लिए अपनी ऐप्स के अपने प्रोसेसर की नीड्स के बेसिस पर ही अपने प्रोसेसर को बना पाएंगे। ताकि कैसा उनको जो है प्रोडक्ट बनाना है उसमें किस लेवल का प्रोसेसर चाहिए होगा उसके ही बेसिस पर ये ओपन सोर्स रखा गया, तो इसलिए उसके बेसिस पर ये कस्टमाइज़ कर पाएंगे। एप्लीकेशंस देखें इसकी अगर हम, तो वेरेबल्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, IoT, होम अप्लायंसेस, स्मार्टफोन्स, ऑटोमोटिव, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, हर जगह इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मुथुवन ट्राइब। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि मुथुवन ट्राइब को नीलगिरी तहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया जाएगा। मुथुवन ट्राइब बॉर्डर हिल फॉरेस्ट ऑफ केरला और तमिलनाडु में रहती है। डिफरेंट डायलेक्ट बोलते हैं ये, मलयालम मुथुवन और पांडी मुथुवन दोनों अलग अलग तरह के डायलेक्ट बोलते हैं। ये एनिमिस्ट हैं, स्पिरिट वर्शिपर्स हैं, फॉरेस्ट गॉड्स को वर्शिप करते हैं, वाइल्ड लाइफ के साथ कोएग्जिस्ट ये करते आए हैं आज तक अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज से। एक यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉलो करते हैं जिसको कानी सिस्टम कहते हैं। ये कानी जो मतलब एक तरह से विलेज होते हैं, विलेज के जो हेड होते हैं उनको हम कानी कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज के लिए। ये एक्सपर्ट्स होते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में। और ऑक्यूपेशन में अगर हम देखें तो मुथुवन ट्राइब एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन रखती है। अब प्रोजेक्ट ताहर क्या है? प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर एक तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें कि नीलगिरी ताहर पॉपुलेशन को जो है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, री इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इनको हिस्टोरिकल हैबिटेट में। 5 साल का प्रोजेक्ट है। साल 2027 तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गल्फ ऑफ गिनी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवल शिप INS सुमेधा रिसेंटली एक पोर्ट विजिट कर रही है लागोस में, नाइजीरिया में, एज पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ गिनी की डिप्लॉयमेंट। तो ये गल्फ ऑफ गिनी क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन का, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर जहाँ पर पास होते हैं, मतलब एक तरह से इंटरेक्ट करते हैं 0 डिग्री का नॉर्थ और 0 डिग्री ईस्ट में, वहाँ पर ये जो है गल्फ ऑफ गिनी लोकेटेड है। लगभग 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 6000 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है, नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ पर, वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स देखने को मिलेंगे आपको। बहुत ही कम सैलिनिटी है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर ड्रेन होती हैं, खासकर वोल्टा और नाइजर रिवर। लगभग 16 कोस्टल कंट्रीज़ यहाँ पर लोकेटेड हैं और 35% वर्ल्ड का टोटल पेट्रोलियम रिजर्व्स आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस गल्फ्स है क्योंकि यहाँ पर वाइडर स्प्रेड पायरेसी चलती है। ठीक है, अब INS सुमेधा क्या है? ये थर्ड शिप है इंडिजिनसली बिल्ट सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की।
डिज़ाइन और डेवलप इसको किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 2014 में। इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट जो कि विशाखापट्टनम बेस्ड है, उसी का ये पार्ट है। इसके प्राइमरी फंक्शंस अगर हम देखें तो ये ईईजी, सर्वेलेंस, एंटी पायरेसी पेट्रोल्स, फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशंस, ये सब जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 6000 नॉटिकल माइल्स, मतलब 11000 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है। और ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल की तरह ये काम करता है, एक्सटेंडेड मिशंस और ऑपरेशंस भी कर पाता है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is targets of ISRO. This topic is important for your science and tech section. So building on the success of Indian space initiatives like Chandrayaan 3 and Aditya L1 missions, Prime Minister Modi has announced two new targets for space agency ISRO. So these two new targets would be about setting up an Indian space station by the year 2035 and taking the first Indian to moon by 2040. So what are the future targets set by PM Modi for ISRO? So Gaganyaan mission, of course, this high level meeting was called to assess the progress of Gaganyaan mission, under which the first test vehicle is slated to fly on October 21. So PM Modi also set out mission for the Bharatiya Antariksh Station, which will be also called the Indian Space Station, and it would be set up by 2035. Of course, it would be much smaller than the International Space Station, and it would weigh only 20 tons. Even the Chinese space station is 100 tons, as compared to 450 tons of ISS, the International Space Station. So India will also be sending the first Indian to the moon by 2040, and India will also be developing a series of other Chandrayaan missions also. For example, the next Chandrayaan mission is likely to bring samples from the moon. We are also preparing for a Venus mission, which would be called Shukrayaan, and of course, no further details have been provided regarding Shukrayaan mission. There would be some other targets also, like ISRO is working on a next generation launch vehicle, a new launch pad, and human centric laboratories and other technologies. So the next topic is Broadcasting Content Complaint Council. This topic is important for your governance section. So Broadcasting Content Complaint Council has recently asked entertainment channels to exercise extreme caution while portraying the scheduled castes and scheduled tribes in television programs. So this BCCC is an independent self-regulatory body which was set up by the Indian Broadcasting and Digital Foundation in 2011, and the primary role of BCCC is to implement self-regulatory guidelines for non-news channels. So these guidelines have been formulated after deliberations from the industry and the government of India to arrive on a common uh, uh, idea regarding national interest, racial and religious harmony, ill treatment of children, social values, sex and nudity, violence and crime, gambling, drugs, smoking, etc. Okay, so any viewer can lodge a complaint regarding the issues related to television programs or shows, and this BCCC is composed of 13 members, consisting of one chairperson, four non-broadcast members, four members from national level statutory commissions, and four members from the broadcasting industry. So how does this BCCC works. So in case of a valid complaint, the channel is asked to provide their view regarding the offensive content within one working week. This After the evaluation of channel's response, if the BCCC committee is not satisfied, then it would pass a directive regarding modification or withdrawal of that content. Failing which, the BCCC sends out a notice to the ministry. A detailed report to the Ministry of Information and Broadcasting within 24 hours. So, what is Indian Broadcasting and Digital Foundation? Actually, it was initially uh, called as the Indian Broadcasting Foundation, and it was established in 1999 as the apex body of broadcasters. And this organization has recently been rechristened into Indian Broadcasting and Digital Foundation. It has been expanded to cover digital platforms also under its roof. It is also the spokesman of the Indian broadcasting industry. So its member comprise of both news and non-news channels. It provides research-based legislative inputs to the government and carries out advocacy also.
uh, to facilitate the drafting of conducive policies by the government. So the next topic is Saptakoshi High Dam. This topic is important for your international relations. So Nepal and India have recently agreed to reduce the height of the proposed Saptakoshi High Dam regarding concerns over the uh, inundation of large swathe of land upstream of the dam. So this Saptakoshi High Dam is a multi-purpose project which is being constructed on the Saptakoshi River of Nepal, also known as Koshi River in India. So the project aims to control floods in southeast Nepal and northern Bihar, and it also aims to generate hydropower. So it's a bilateral project of Indian and Nepalese government under the Kosi Agreement. So this proposed place lies 1.6 kilometer upstream from Barakeshtra temple in Sunsari district of Nepal. So this Koshi river is a transboundary river which flows through India and Nepal. It is the largest river basin in Nepal, and it has one of the biggest. It is one of the biggest tributaries of Ganga, and it originates from Tibetan Plateau across the Himalayas and flows through Mahabharat Range and Shivalik Hills to reach the plains of eastern Nepal, and finally meets the Ganga in India. So the overall length of this river is 729 kilometers, and over the last 250 years, this river has changed its course, and because of course the unstable nature of it due to heavy silt, and this river has also been dubbed as the sorrow of Bihar, which inflicts devastating floods and substantial damage each year. Okay, in the state. So the next topic is advanced traffic management system standards. This topic is important for your governance section. So to improve road safety and reduce incident response time, National Highways Authority of India is implementing upgrading the advanced traffic management system standards and specifications 2023. This will enhance road safety by using digital enforcement on national highways and expressways. So integrated utility corridors would be made along national highways to develop optic fiber infrastructure. So under the new standards, existing vids cameras will be replaced by video incident detection and enforcement system. These cameras are slated for installation every 10 kilometer along national highways, and this would also help in vehicle speed detection and also optimize the use of automatic number plate recognition cameras. This would also detect incidents, and they would alert route patrol vehicles or ambulances. It would also generate challans, relay alerts to the nearby messaging boards, and send notifications to the nearby travelers through the Rajmarg Yatra mobile app. This will also play an active role in disaster management also. Okay. So the next topic is Risk V technology. This topic is important for your science and tech section. Recently, chip designer Qualcomm has partnered with Google to make chips on RISC-V technology for wearable devices. So RISC-V technology is an open source technology which is considered as the fifth generation technology of processors. It actually began as a project in UC Berkeley for academic use, but later on member companies joined it to contribute their share in processor innovation. Because of it being open source, it allows designers to customize and build their processors in a way which is tailored to their target and applications. So it has several applications like wearable, industrial, IoT, home appliances, smartphones, automotive, HPC, and even data centers. So the next topic is Muthuvan tribe. This topic is important for your environment section and your social issues. According to Tamil Nadu Forest Department, Muthuvan tribe will be part of Nilgiri Tehar Conservation Project. So these Muthuvan people live in border hill forests of Kerala and Tamil Nadu. They speak slightly different dialects and they call each other Malayalam Muthuvan and Pandi Muthuvan. So they are animists and they are spirit worshippers. They also worship the forest gods. They are known for coexisting with wildlife. So these tribal people also follow a unique system of governance called the Kani system. Under this system, each village is headed by a Kani who is responsible for the administration of the village. And these people are expert in traditional medicines also. Agriculture is their main occupation. What is Project Tahar?
This is the project by Tamil Nadu government to develop a better understanding of Nilgiri tahar population and to reintroduce them to their historical habitat also. Um, so project is being implemented for the 5-year period between 2022 and 2027. So the next topic is Gulf of Guinea. This topic is important for your international relations and security section. So Indian naval ship INS Sumedha has recently made a port visit to Lagos, that is in Nigeria, as part of its deployment to the Gulf of Guinea. So Gulf of Guinea is the northeasternmost portion of tropical Atlantic Ocean, and it is located off the western coast of the African continent. It is found at the junction of prime meridian and equator, and it has a narrow continental shelf also. So it covers an area of about 2.3 million square kilometers, uh, and it has warm tropical waters with relatively low salinity also, because many rivers drain into it, and due to high rainfall in this region. So it has Volta and Niger rivers as its major tributaries. So 16 coastal countries fall in this region, and they are situated along this Gulf of Guinea. So this Gulf of Guinea region also accounts for more than 35% of world's total petroleum reserves. It is one of the world's most dangerous gulfs because of the widespread piracy in this area. Um, so what is INS Sumedha? So INS Sumedha is the third ship of the indigenously built Saryu class naval offshore patrol vessels, and it was indigenously designed and built by the Goa Shipyard Limited. It was commissioned into the Indian Navy in 2014, and it has been a part of the Indian Navy's Eastern Fleet based in Vishakhapatnam. Its primary function involves around EEZ surveillance, anti-piracy patrols, fleet support operations, maritime security for offshore assets, and carrying out escort operations for high value assets. So it has a range of about 6,000 nautical miles, which means about 11,000 kilometers, and uh, it can it has a speed of about 16 knots, that is about 30 kilometer per hour. Okay, so that's why this offshore patrol vessel is suitable for extended missions and operations. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.